Assalamu alaikum students. I am your principal course instructor, Miss Anika Saidzia from University of Education, Bank Road Campus, Lahore, and I am your principal course instructor of this subject, which is your major course in painting thesis, and the course code is FINE4125. First, we will see the contents of your major thesis project, which is a practical subject. Thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The students will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work, as well as the project outcome. To provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of the thesis exhibition. Obviously, जो भी आप thesis का काम प्रोड्यूस करेंगे, आपके जो कैनवसेस होंगी, जो पेंटिंग्स होंगी, वो किसी स्पेसिफिक आइडिया और थॉट के अंडर जो है वो बनेगी, और आपकी जो विजुअल रिसर्च है वो भी उसी से रेलेवेंट होगी आपके आइडिया से। और आपका जो आइडिया ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, जिसमें ज़्यादा मार्जिन होगा रिसर्च का, उसको हम प्रेफर करेंगे। और आपका जो सुपरवाइज़र है ऑब्वियसली वो आपको एक स्पेसिफिक गाइडलाइन के थ्रू जो है वो आपको गाइड करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी आपको जो है उसके बारे में भी प्रिपेयर किया जाएगा फॉर द थीसिस एग्जीबिशन. So today we are going to discuss about the Surrealism. Surrealism literally means above and beyond reality. It was a 20th century avant-garde movement in art and literature which sought to release the creative potential of the unconscious mind, for example, by the irrational juxtaposition of images. सो एवन गार्ड मूवमेंट मीन्स एवन गार्ड मूवमेंट वो मूवमेंट्स थी जिन्होंने प्रीवियसली जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल रूल्स थे पेंटिंग्स के, और आइडियाज़ थे कि किस तरह से आप जो कॉन्सेप्ट्स थे लाइक जो प्रीवियस हमें नज़र आती हैं आर्ट मूवमेंट्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि रेनेसांस है और न्यू क्लासिसिज्म है, ठीक है, बरोक आर्ट मूवमेंट है, रोमांटिसिज्म है। तो उसके बाद जो ये आर्ट मूवमेंट आई है जिन्होंने इसको नेविगेट किया है, इसको मानने से इनकार किया था प्रीवियस आर्ट मूवमेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स थे, उनके जो रूल्स थे, और अपने जो न्यू कॉन्सेप्ट्स थे, न्यू आइडियाज़ थे, उनको उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। तो बेसिकली एवन गार्ड मूवमेंट वो मूवमेंट्स हैं जिन्होंने पिछली जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है अबंडन किया है, और अपने जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आइडियाज़ हैं, जो थिंकिंग है, उनको आगे परस्यू किया था। तो स्पेशली इन सुरलिज्म वी फाउंड अनकॉन्शियस माइंड। आप जो कॉन्शियसली देख रहे होते हैं, जो अपनी इंटेंशन से आप होश में हैं और वो देख रहे हैं चीज़ें, उनको परसीव कर रहे हैं। तो सुरलिज्म में आर्टिस्ट ने अनकॉन्शियस माइंड पे प्रेफर किया था। अनकॉन्शियस माइंड कि इफ़ यू आर स्लीपिंग, इफ़ यू आर इन सम सेमी कॉन्शियस स्टेट, और इफ़ यू आर इन ड्रीम लाइक कंडीशन, तो इस तरह के हमें जो है पेंटिंग्स नज़र आती हैं, और उसमें रियलिटी बेस्ड नहीं है, फार फ्रॉम रियलिटी हमें इमेजेस नज़र आते हैं, और नॉन रियलिस्टिक जो है वो हमें नॉन रियलिस्टिक नेचर भी नज़र आती है, नॉन रियलिस्टिक क्रिएचर्स भी नज़र आते हैं, ठीक है, हमें एमैल्गमेशन नज़र आता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट फिगर्स का, जो हमें रियलिटी में इस तरह से नज़र नहीं आते हैं. What are the elements of surrealism? Surrealistic art is characterized by dream-like visuals, the use of symbolism and collage images. Collage images basically कि आपको एक पेंटिंग में एक विजुअल है तो उसके साथ डिफरेंट विजुअल्स नज़र आएंगे, और ऐसे लगेगा कि उनको इनकॉपरेट किया गया है, उनको आपस में मिक्सअप किया गया है, और आपको समझ नहीं आती है एट द फर्स्ट ग्लांस कि ये क्या है, आपको सिम्बॉलिकली उसको डीकोड करना पड़ता है एवरी image को. Several prominent artists came from this movement, including Margaret Dali, and Salvador Dali was a very famous artist of that movement, Surrealism. और ये this is the painting of the same artist, Salvador Dali, The Enigma of Desire. So, in this painting, you can see a dream-like quality, a dream-like treatment of landscape. Two types of surrealism.
The two types of surrealism are automatism and verism. For automatism, artists such as Henri Mazin tried to picture his thoughts without exerting any active control over them. There was no discernible meaning to the artwork. This is a very famous painting by Salvador Dali. What are the basic principles of surrealism? The surrealists sought to channel the unconscious as a means to unlock the power of imagination. So जब आप नॉन रियलिस्टिक काम करते हैं, जब आप नॉन रियलिटी बेस्ड काम करते हैं, तो उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है दैट यू कैन क्रिएट और यू कैन प्ले विद इमेजिनेशन. आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है. यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक सच रूल्स और आउटलाइंस और गाइडलाइंस जिसके अंदर रहते हुए आपको काम करना होता है. सो उसका एक तो आपको बेनिफिट भी होता है दैट यू कैन प्ले विद डिफरेंट इमेजेस, विद डिफरेंट कलर्स, विद डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, और आप उसके अंदर जो है वो किसी भी जो है हद तक आप उसको जो है इमेजिनेशन के साथ प्ले कर सकते हैं. देर इज़ नो सच काइंड ऑफ लिमिट फॉर आर्टिस्ट कि आप उसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो है उसके अंदर काम करें. As you can see in this painting, there is a pomegranate in the perspective and there is a fish. All this painting is symbolic and there are various kind of symbols have been used in this painting. Disdaining rationalism and literary realism and powerfully influenced by psychoanalysis, the surrealists believe the rational mind repressed the power of the imagination, weighing it down with taboos. So, ये जो आपने पेंटिंग देखी है प्रीवियसली, द टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज ड्रीम कॉज्ड बाय द फ्लाइट ऑफ अ बी अराउंड अ पोमिग्रेनेट अ सेकंड बिफोर अवेकनिंग. सो सुरलिस्ट जो आर्टिस्ट थे, सुरलिज्म आर्ट मूवमेंट में जितने आर्टिस्ट आते हैं उनको हम सुरलिस्ट जो है वो बोलते हैं. सुरलिस्ट बिलीव दैट द रैशनल माइंड, जो इंसान का एक रैशनल माइंड है, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता इमेजिनेशन को, वो उसको एक तरह से जो है वो सप्रेस कर देता है. सो अनकॉन्शियस माइंड जो है वही उसको अच्छे से जो है पोर्ट्रे कर पाता है. द ग्रेट मास्टरबेटर. Surrealism is a modern movement in art and literature that tries to express the subconscious mind. An example of Surrealism is the work of Salvador Dali. This is another painting by the famous artist Salvador Dali. As you can see, various forms हमें इसमें नज़र आ रही हैं. At the same time, you can see female figure, the burst of female figure, and on the left side you can see an imaginary creature having eyelashes. And overall, the environment is very non-realistic and it is very imaginary at the same time. So इस पेंटिंग में भी हमें बहुत सारे डिफरेंट सिम्बल्स मिलते हैं. एज यू कैन सी द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक फ्लावर अगेंस्ट द फीमेल फिगर. सो सल्वाडोर डाली ने जो है वो अपने काम में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन को एक्सप्लोर किया है, और एट दैट टाइम इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी ग्रेट डील that artist has used his imagination to portray such subjects in paintings of that time. So उस टाइम के अंदर इस तरह से एक इनिशिएटिव लेना और एक आपके जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं और उनका बाइकआउट करना और एक न्यू थॉट के साथ जो है अपनी पेंटिंग्स को और आइडियाज़ को पोर्ट्रे करना, इट वाज अ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम. So this painting is very sensual at the same time. There are various symbols, as you when you will see very closely you can identify such symbols. What is the difference between Dadaism and Surrealism? While Dadaism represented the mockery of rules and shared knowledge,
and propagated meaninglessness and absurdity. Surrealism was about finding a bridge between subconscious and the reality. Surrealism was never anti art, or its idea of autonomy never had the same meaning as to what chance had for Dadaism. So, Dadaism was another art movement. Surrealism के साथ ही हमें डेडिज्म भी मिलती है, एक आर्ट मूवमेंट, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो रैशनल और नॉन रियलिस्टिक जो है हमें काम देखने को मिलता है। और कोई भी चीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं लगती। इन डेडिज्म जो है वो काफ़ी हमें एनर्जेटिक और आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो हमें काम नज़र आता है। बट जो सुरलिज्म है उसके अंदर आर्टिस्ट ने फोकस किया है सबकॉन्शियस पे, बट रियलिटी बेस्ड हमें ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि टोटली इमेजिनरी है, टोटली जो है उसमें इमेजिनेशन है। हमें इसमें रियलिटी से भी, रियलिटी बेस्ड भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, सब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू।